Welcome to your online classes SST. Today we will start chapter number 12, the early humans. I think few of you have already studied this chapter. It's okay, we will revise it today. I'm going to share your book with you. Yes. So, early means, in in past, yes. So early humans in past, how humans were like many years ago, yes, before hundreds of thousands years ago. So in this chapter you will read about these people who were living when when no light was there, at starting how people lived, yes, when they did not cannot write, also they did not know how to read and how to write, है ना, कैसे लिखते थे, लिखना नहीं जानते थे, जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, सो दे वर नॉट हैविंग एनी हिस्ट्री, है ना, और उसको कौन सा पीरियड बोलते हैं, दैट पीरियड इज नॉन एज प्री हिस्ट्री period, the period in which people did not know how to study, how to read and how to write, then that period was known as prehistory period. Which period? Prehistory period, है ना, long ago, बहुत साल पहले. The earth, जैसी अर्थ हमें आज दिखती है ना, वैसी अर्थ नहीं हुआ करती थी पहले, काफी चेंजेस इसमें आए हैं, है ना. देयर वर, वहां कौन रहते थे, देयर लिव्ड अर्ली ह्यूमंस who were like who were like us yet not so like us. वैसे वो हमारे जैसे ही थे, ह्यूमन बींग्स थे, because they were human beings, yes, but their life was very different. They did not used to wear the clothes like us, they did not use the languages like us, they were not having their houses, है ना, they used to live in the caves, yes, in downside the trees, in the way the nature wanted them ना, नेचर के जैसे ही वो अडॉप्ट कर लेते थे, अपने आप को चेंज कर लेते थे, वैसे ही वो रह लेते थे. अर्ली ह्यूमंस लर्न टू एडजस्ट टू देयर नेचुरल एनवायरमेंट. ओपन योर बुक्स बेटा, ओपन योर बुक्स, ओपन योर एसएसटी बुक्स, चैप्टर नंबर 12. long ago means बहुत साल पहले. The earth was very different from today. Earth was very different from today. आज जैसा हम अर्थ को देखते हैं वैसा अर्थ नहीं था. There lived early humans. कौन रहता था? Early humans रहते थे. Early means पहले की. Who were like us, जो कि हमारे जैसे ही थे, लेकिन हमारे जैसे नहीं भी थे, एकदम सेम नहीं थे. क्यों थे वो ह्यूमन्स ही, but the way of their living was very different, yes, the way of their living was very different. Early humans learned to adjust to their natural environment. जैसा भी natural environment होता था, they used to adjust themselves. They lived in caves and learned to make tools using stones and animal bones. I told you they lives in where? Caves, है ना. Caves means गुफा, which are made up of naturally, which are made, है ना, पहाड़ों में, जंगलों में वो बनी हुई रहती थी, and people used to live there only. They did not used to have houses like we live in, है ना. And they learned to make tools बनाते थे वो. Tools like we have hammer, have you seen a hammer, screwdriver, है ना, हथौड़ा, screwdrivers, इन सबको हम tools बोल सकते हैं. तो वो लोग भी धीरे धीरे टूल्स बनाने लगे, पत्थरों से, स्टोन से, है ना, एनिमल्स की बोन से. उनके पास पहले अपने जितनी चीज़ें तो होती नहीं थी, सो जैसा उनको नेचर में चीज़ें मिलती थी, उन्हीं से वो अपना गुजारा कर लिया करते थे. यस, दे डिड नॉट विश कि हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए ना. ऑन योर बर्थडेज यू मेक डिफरेंट विश टू योर पेरेंट्स, सो इट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, है ना. ये ऐसा नहीं करते थे. जैसा इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होता था, ये लोग एडजस्ट
कर लेते थे. See in this picture people are making ना. See ये कुछ stones बना, stone से और हड्डियों से क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, they are making some tools. Can you see here? See स्टोन से ही एक दूसरे की स्टोन से की हेल्प से वो लोग काट पीट कर टूल्स बनाते थे. एंड दीज टूल्स दे यूज्ड इन हंटिंग, है ना. अर्ली ह्यूमंस यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, है ना. हंटिंग करने के लिए वेयर डिड दे गेट फूड फ्रॉम, है ना. उस वक्त कोई रेस्टोरेंट्स तो होते नहीं थे, जोमेटो होता नहीं था. सो हाउ डिड दे यूज टू गेट देयर फूड, ये क्या करते थे, हंटिंग. ईदर दे यूज टू कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, like from forest they can get some herbs, some fruits, some vegetables, है ना. फॉरेस्ट से कुछ वेजिटेबल्स वगैरह उनको मिलती, वही वो खा लिया करते थे. ठीक है. या फिर क्या करते, वो एनिमल्स की हंटिंग करते, शिकार करते, एंड उनको वो खा लिया करते थे. दे यूज टू ईट द एनिमल्स आफ्टर किलिंग दैम. Early humans discovered how to make and use fire, and then slowly and gradually, धीरे धीरे they discovered what, fire, and which was a turning point in their lives, है ना. फायर कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ उनकी लाइफ में, क्या 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 चेंजेस है. a lot of changes came due to fire. how, क्या कर सकते थे वो फायर से. फर्स्ट ऑफ ऑल फायर से वो पहले के ज़माने में उस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था. इट वॉज वेरी कोल्ड इन द टेम्परेचर, बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद फायर व्हाट दे कैन डू, कि उनको थोड़ा हीट मिलता था, प्लस दे ऑल्सो गेट सम लाइट इन दैट, थोड़ा लाइट भी मिलता था फायर से, एंड दे गेट सम हीट ऑल्सो, है ना. सो दे कैन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर. अच्छा, और क्या मिलता था उनको फायर से, दे कैन कुक देयर फूड नाउ. अब वो अपने फूड को भी क्या कर सकते थे, कुक कर सकते थे, पका सकते थे, है ना. सो दैट वाज अनदर चेंज. फर्स्ट चेंज वाज दैट दे कैन गेट सम हीट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर, yes, some light also. Secondly, they can get some, what, they can cook their food, है ना. एंड वेन इट मे हैपन कि उन्होंने कुक करके देखा और उन्हें अच्छा लगा, तो वो उसी को प्रैक्टिस करने लग गए. थर्ड प्रैक्टिस वॉज दैट दे यूज द फायर टू स्केयर अवे, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको फायर से डर लगता है, तो वो फायर के पास नहीं आते थे, है ना. तो दे यूज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते थे उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल जाता था. ठीक है. See how fire became turning point in the people life. See, they used to, see here, they used fire to cook raw meat and also to keep themselves warm. They used what, fire to cook raw meat. जो raw means कच्चा जो meat वो obtain करते थे animals की hunting करने के बाद, they use that for cooking and also to keep themselves warm, and they also use fire to keep themselves warm. That is why the fire was turning point in their life. इससे उनको क्या मिला, फूड मिला, पका पकाया, है ना, अब पका सकते थे वो, एंड दे ऑल्सो गेट हीट. See in the pictures, students, early humans were hunter gatherers. They made tools and weapons of stone for hunting and gathering, है ना. They used what, tools and weapons, different tools they used for hunting and gathering food, है ना. फूड उनको कलेक्ट करना पड़ता था, दैट इज नॉन एज गैदरिंग. Early humans learned how to make a fire, then they used to make fire. Early humans began farming and settled down. And at the third stage, first of all, they made some stones and of bones, they made some tools and weapons from bones or stones. And with the help of these tools and weapon, what they do, they used to they used to do hunting and gathering. You know, early people were also known as hunters and gatherers. What they were known as?
hunters and gatherers. Hunters means those who hunt, and gatherers means those who collect, है ना, जो collect करते हैं उनको बोलते थे gatherers, and hunters those used to hunt. तो जो ये लोग क्या करते थे, शुरू शुरू में हंटिंग करते थे ना, टू ऑब्टेन मीट एंड दैट, है ना, एनिमल्स को खाने के लिए हंटिंग करते थे. और क्या करते थे ये, फ्रॉम फॉरेस्ट दे यूज्ड टू कलेक्ट fruits, herbs, है ना, vegetables and all these things to eat. That is why they were also known as hunters and gatherers. Clear? Now see, I am reading in your book. Yes, I am reading it for you. Chapter number 12, page number, I'll tell you better. Page number of your book, this is page number 75. Open page number 75 of your book. Okay, thousands and thousands of years ago means हजारों साल पहले, हजारों लाखों सालों पहले, when early humans first appeared on the earth, जब early humans को सबसे पहली बार देखा गया अर्थ पे, yes, appeared on the earth, they did not know how to read and write, है ना. I told you that they did not know how to read and how to write. Yes, so there is no written history of that time. तो वो लोग कैसे रहते थे, उन चीज़ों की कोई भी हिस्ट्री नहीं है. दिस पीरियड इज नॉन एज प्री हिस्ट्री. आई टोल्ड यू, जो अर्ली ह्यूमंस का पीरियड था उसे कौन सा पीरियड बोला जाता था, प्री हिस्ट्री पीरियड. विच पीरियड इट वॉज नॉन एज बेटा, प्री हिस्ट्री. The period of time that comes after the invention of writing is called the history. Yes, so the period which came after prehistory, when the people used to people learn to read and write, है ना. राइटिंग के इन्वेंशन के बाद, है ना, राइटिंग के इन्वेंशन के बाद जो टाइम आया उसको बोलते हैं हिस्ट्री. और जब तक राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, लिखना इन्वेंट नहीं हुआ था, दैट पीरियड वाज नॉन एज prehistory. Clear? Prehistory and history. Prehistory, when people did not know how to read and write. After the invention means आविष्कार, किसी चीज को इन्वेंट करना, है ना, तो जब नई चीज बनना. So when people started to write na, that period is known as history period. Archaeologists. Who are archaeologists? Archaeologists are the people who study the remains. Remains means the left out parts of the old buildings, the ancient buildings, and the ancient anything whatever is found in the ग्राउंड, है ना. एंशियंट लोगों की जो हड्डियां वगैरह मिलती हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं. कुछ पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनके रिमेन्स जो बचे कुचे पार्ट हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट देखा जाए तो किसके बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में, विच आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री बोथ. सो आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस लर्न अबाउट द अर्ली ह्यूमंस, है ना, क्योंकि अर्ली ह्यूमंस जो थे दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट. तो हमें उनके बारे में पता कैसे चला, या तो वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे उनसे, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने उनके बारे में हमें बताया है. दे डिग इनटू द अर्थ. क्या करते हैं, अर्थ में डिग, खुदाई करते हैं, टू फाइंड द रिमेन्स सच एज बोन्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द पास्ट, so that they can find that how which type of people lived in the past, which type of animals lived in the past. They also look at objects such as tools, pottery and coins, है ना. And in sometimes while digging they find some coins, some pottery, some tools which also they used to find about the past. Yes. Next is birth of early humans. In prehistoric times, the earth was very different from what it is
today. The climate was too cold. I told you the climate was very cold, shivering, like in the morning it is there, na? Near around 6 o'clock. Do you wake up by that time? No, ma'am, we are in bed only, yes? So, if you will wake up by early in the morning in these times, near around January, yes, so you will find very cold weather. So in early time also the weather was very cold. Humans were also very different from what they are today, है ना? Humans जैसे आज हैं वैसे पहले नहीं थे. They looked very different. They lived a very different life. Have you ever seen a chimpanzee? Have you ever seen a chimpanzee? How does it looks like? Chimpanzee देखा आपने? It looks like a monkey, ना? Yes. And like humans also, yes. So you will be surprised to know that chimpanzees are our cousins. Who are chimpanzees? Our cousins. Cousin means your brothers or sisters, है ना? Your uncle's son or their daughter, है ना? They are your cousin, brother or sister. So chimpanzees are also our cousins. Many years ago, अभी नहीं, बहुत सालों पहले, humans and chimpanzees had a common ancestors named the great ape, which lived in Africa. हमारे, है ना, ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज और ह्यूमंस का जो एंसेस्टर्स मीन्स आवर फोर फादर्स, लाइक योर ग्रैंडफादर, है ना, लाइक फादर ऑफ योर ग्रैंडफादर इज योर एंसेस्टर, यस, एंड लाइक आवर फोर फादर्स आर our ancestors. Students, last 10 minutes I will give you doubt counters. That time I'll unmute you. Whatever doubt you will have, you can ask me during that doubt period. Is that clear? At the end of the session, I'll unmute you and I'll let you ask me doubts, so you can ask me doubts over there. So since the weather was very cold, I have explained you people lived very differently. Then we were talking about our ancestors. Ancestors means हमारे पूर्वज. पूर्वज means like our great grandfathers, है ना? ये जो हमारे पहले हमसे पहले आए हुए हैं इस अर्थ पे, right? They are known as our ancestors, like our great grandfather or our grandfather. They are our ancestors. So the ancestors of chimpanzee and ancestors of us humans were great ape who lived in Africa. Like for example, you are there, है ना, and your cousins. Who are your cousins? Maybe your uncles or your father, sisters, daughters, है ना, their children. They are your cousins. So your ancestors and your cousins' ancestors are same only, na? Yes or no? Say yes or no, students. आपके जो पापा हैं उनके पापा और आपकी बुआ के पापा सेम ही तो है ना? Yes. So we have same ancestors. वैसे ही जो चिंपैंजी थे उनके ancestors थे ग्रेट एप और ह्यूमंस के ancestors भी थे ग्रेट एप. इसलिए हम लोग cousins हो गए, chimpanzees and humans. Yes. See, in the box what has been given, the scientific name for the human beings is Homo sapiens, which means wise men. Scientific name क्या होता है humans का? Homo sapien, और उसका मतलब होता है wise men, अच्छे इंसान, है ना? Life of early human as hunter and gatherers. I told you early humans were hunter and gatherers. Yes, the life of the early humans was very difficult and dangerous. How dangerous? Because they had to hunt animals, and if the animal would attack them, then they would lose their life, है ना? Hunting के time पे अगर animals ने उनके ऊपर attack कर दिया, तो उनकी life danger में हो जाती है ना? Yes. So it was very dangerous for them. The weather was also very cold and they were not having clothes also. See, they moved from one place to another place in search of food and in search of water and
एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, उनको आता ही नहीं था क्रॉप्स जो है वो कैसे उगाई जाती हैं. दे एट बेरीज नट्स एंड रूट्स विच दे प्लग्ड मीन्स तोड़ना पेड़ों से, जैसे इफ यू विल प्लक ए फ्लावर, अगर आप कोई फ्लावर तोड़ते तो उसे क्या बोलते हैं, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, तो ये पेड़ों पे से क्या तोड़ते थे, बेरीज नट्स रूट्स, और उन्हीं को खाते थे, है ना. विच दे प्लग फ्रॉम द ट्रीज और डग आउट फ्रॉम अंडरनीथ द सॉइल. कुछ जैसे रूट्स हैं पेड़ों की, तो रूट्स आपको कहाँ मिलेगी, अंडर द सॉइल ना. यू नो योर ग्राउंड नट्स कैरेट्स रेडिश, ये सब ग्राउंड के अंदर ही होती हैं. रेडिश है, गाजर मूली, ये सब सॉइल के नीचे रहती है ना. पोटैटो इसीलिए इनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी भी लगी हुई रहती है, क्योंकि इन्हें खोद के निकालना पड़ता है ग्राउंड में से, मिट्टी में से. ठीक है, तो ये लोग या तो पेड़ के ऊपर से कुछ फ्रूट्स हम लोग पेड़ के ऊपर से तोड़कर भी खाते हैं, लाइक ऑरेंज गुआवा, ये सब चीजें है ना. और कुछ जैसे कि गाजर मूली, ये सब्जियां हैं, ये हमें सॉइल के अंदर से मिलती है, जो जिसको हमें खोद के निकालना पड़ता है. वी हैव टू डग आउट द सॉइल, राइट. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर मीट विच दे एट रॉ बिकॉज दे हैड नॉट लर्न हाउ टू मेक फायर, है ना. उसके बाद ये क्या करने लगे, धीरे धीरे हंटिंग करने लगे. लेकिन हंटिंग में क्या होता था, इनको जो मीट था ये कच्चा ही खाते थे, क्योंकि इनको फायर उस वक्त नहीं लगाना आता था. एज दे लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग अदर फूड आइटम्स, अर्ली ह्यूमंस वर नॉन एज हंटर गैदर्स, है ना, क्योंकि ये हंटिंग करते थे और गैदर करते थे अलग अलग आइटम्स फॉरेस्ट से, इसलिए इनको हंटर गैदरर्स बोला जाता है. In course of time, early humans learned to make tools of stones and bones, use these weapons as to keep wild animals away and dig up roots to eat. ठीक है, धीरे धीरे in course of time means in some times early humans learned to make tools. इन्होंने क्या learn किया, tools कैसे बनाते हैं, stone से bone से, है ना. और इन टूल्स को ये यूज करने लगे, वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए, है ना. और पेड़ों की जो रूट्स वगैरह ही खाते थे उसको डिग करने के लिए. ठीक है, दे ऑल्सो यूज दीज टूल्स टू क्लीन द स्किन ऑफ द एनिमल्स दे हंटेड एंड मेड क्लोथ्स यूजिंग द स्किन. और जो एनिमल्स की स्किन होती थी जिसको ये निकालते थे, है ना, और उसको क्लीन करने के लिए ये टूल्स को यूज करते, ताकि उसे वो कपड़ों की तरह पहन सके, सर्दी से खुद को बचा सके. यस, अपनी बॉडी को कवर कर सके. सी, hunting was done, here it is written na, hunting was done together to kill large animals. अगर बड़े बड़े एनिमल्स को मारना होता था तो हंटिंग कुछ लोग मिलके करते थे. गैदरिंग, दे गैदर्ड फूड लाइक वाइल्ड फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स, है ना. ये लोग क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, काफ़ी चीज़ों की कलेक्ट करते थे ना, जैसे कि जंगली फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह. फायर, धीरे धीरे इन्होंने फायर सीखा, है ना, और फायर लगाने से फिर उन्होंने अपना फूड कुक करना स्टार्ट किया. यस, देन दे लर्न व्हाट, they learned that how they can make clothes from the animal skins. Yes, they used animal skins to make their clothes. Tools, early humans learned to make tools of stone. They used these tools to hunt fish and cut the raw meat ऑफ एनिमल्स. जो रॉ मीट है, कच्चा मीट है, उसके एनिमल्स को हंट करने के बाद काटना भी तो पड़ता है ना, उनका मीट निकालने के लिए, फ्लैश निकालने के लिए. ठीक है, सो ये सब चीजें वो कैसे करते, ये सब चीजें वो करते थे स्टोन्स वगैरह, बोन्स वगैरह से जो टूल्स बनाए हुए रहते थे उससे. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स,
So this was all for today. In next class we will proceed the chapters. Now I'll open your doubt counters. Yes.